Hello student, solution. So a solution is a homogeneous mixture of two or the more chemically non-reactive substance. Solution ऐसा homogeneous mixtures होता है जो two or more than two components that are the chemically non-reactive. And homogeneous mixture particle size the less than 1 nanometer are 10 to power minus 9 mm diameter. Solvent and the solute. So two component in the solution. Solvent is that component of solution which is present in the larger amount in and by mass, and the solute is a smaller amount by the mass. So another one is a binary solution. Binary. So only the one solute present is called the binary solution. Only two component, one solvent and one is a solute. Aqueous. So solvent used as a water is called the aqueous solution, and other than water is called the non-aqueous. So type of solution on the basis of physical state of solvent solution is a 9 type. Solid type of solution is the solid. So in the type of solution solid there are three type of solution. As a solute solid, solvent solid, solute liquid, solvent solid, solute gas and solvent solids. So examples alloy, brass, bronze, it is homogeneous mixture of the metal. Hydrated salt, hydrated sodium hydroxide, hydrated potassium hydroxide, hydrated sodium carbonate, etc. Amalgam. So amalgam is a one component is a mercury and other any material, so it is called the amalgam. Hydrogen in the palladium or dissolved gas in the mineral is examples of the solid solution. Liquid solution, oxygen dissolved in water, ethanol in water, sugar in water. Gas solution, iodine in the iodine or camphor in air, humidity in air, nitrogen, oxygen, carbon dioxide are mixture of the different gases, that is air. Out of the above, liquid phase solution is the more significant, and mostly we study the liquid solution, solid or the gas solution. So expressing concentration of solution, the quantity dissolved in the volume, that is concentration. So concentration can be denoted by the qualitatively only denote the quality of the solution. Dilute solution are concentrate, dilute small amount of solute and the large amount of solute is the concentrate. Quantitatively mass percentage, volume percentage, part per million, mole fraction, molality, mole etc. normality, ये सब होते हैं. Mass are the weight percentage. Number first, quantitatively expressing concentration of the solution, weight by the weight. So the mass of the solute in the gram present in the 100 ग्राम ऑफ solution. किसी सलूट का जो मास होता है ग्राम में, और 100 टोटल ग्राम जो सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम में जितना होगा वो. एग्जांपल्स ले लें तो मास परसेंटेज, जैसे कि 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है वाटर का और शुगर का. शुगर इन वाटर 100 ग्राम है, तो उसमें 10% सोल्यूशन मीन्स 10% सॉल्यूट है, 90% सॉल्वेंट है. मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. वॉल्यूम परसेंटेज सेम वे, बट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द ml in 100 ml of solution. Volume of component upon the total volume of solution into 100. For examples ले लें 20 ml of the alcohol dissolved in the 80 ml of the water, so its concentration is the 20% and the concentration of solvent is the 80%. Mass by the volume percentage. So the mass of the liquid solute or the solid present in the volume of solution.
mass volume percentage of the component equal mass of component divided by total mass of solution into 100. Next, concentration part per million. It is defined as the mass of the solute present in the 1 million part of the mass of the solution. ये डिफाइन किया जाता है किसी मास जो सॉल्यूट होता है 10⁶ 1 मिलियन पार्ट में डिजॉल्व होता है. तो ppm आल्सो डिनोट बाय द मास वॉल्यूम आर पार्ट पर मिलियन. सो व्हेन द solute present in the very small, very trace amount, so it is used in the medicinal chemistry etc. उसमें लिखा रहता है ऐसे सिरप है ये सब होते हैं तो उस पर लिखा रहता है इतना पार्ट पर मिलियन. पार्ट पर मिलियन कंपोनेंट ए मास ऑफ ए अपॉन द मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶. तो इसे डिनोट करते हैं. और पार्ट पर मिलियन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, कितना पार्ट है 100 पार्ट है 10 पार्ट है डिवाइड बाई टोटल पार्ट 1000 है एंड मल्टीप्लाई 10⁶. So examples 5.8 gram per 10⁶ ग्राम आर इक्वल 5.8 पार्ट पर मिलियन. इस तरीके से इसको दिखाते हैं. मोल फ्रैक्शंस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट may be solute or the solvent is the fraction obtained by the dividing number of mole of that constituent by the total number of mole of the all constituent present. एक फ्रैक्शन अमाउंट होता है. फॉर एग्जांपल्स अगर हम कंसीडर कर लें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट N2 है, सॉल्वेंट N1 है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा N1 अपान, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल अपान द सॉल्वेंट अपान टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हो जाएगा x1 इक्वल N1 अपान द N2 प्लस N1. इसी तरीके से अगर सॉल्यूट का निकालना है तो x2 हो गया N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट अपान द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दोनों कंपोनेंट मिला करके मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 की इक्वल होगा. तो x1 प्लस x2 इक्वल 1 या x1 इक्वल 1 माइनस x2 या x2 इक्वल 1 माइनस x1. ओके.